Dear students, today we'll start chapter 5 of standard 8, that is expansion formulae. Now you have learned some expansion formulae in standard 7th. Now we'll revise those formulae and we'll further learn new formulas in this chapter. So let's first of all revise the formulae which you have learned in standard 7th. Now first formula which you have, expansion formula which you have learned is a plus b whole square. A plus b whole square bracket square equals to, what is the formula? You know formula, a square plus 2ab means 2 into a into b plus b square. और we can also say, हम ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर. अब इसका एप्लीकेशन भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. a प्लस 5 होल स्क्वायर. सो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर. ये याद रखना है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर. सो फर्स्ट टर्म इज a, विल राइट a स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2 इंटू a इंटू 5 प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, that is 5 square. So this will be a square plus now product of these three numbers. So 2 5s are 10, 10a plus 5 square is 25. So this is the expansion of this bracket. Okay, square of this bracket. Now next example is x plus 2y whole square. So in the question, in the book, it is written that actually x square plus, this is the question given in the book, plus box plus 4y square. Now what term will be here? So we'll write the formula, first term square plus 2 into first term into second term plus second term square. So first term is x square plus 2 into x into 2y, first term into second term प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर 2y होल स्क्वायर. अब यहाँ पे एक बार आपने ब्रैकेट नहीं दी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिंगल टर्म है, इसको कोएफिशिएंट 1 है, देयर इज नो अदर कोएफिशिएंट. बट इफ़ यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट नहीं दोगे तो आपको याद रखना है कि 2y होल स्क्वायर इन 2y स्क्वायर, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स. ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि ये होल स्क्वायर है 2y होल स्क्वायर और ये सिर्फ y स्क्वायर है. तो 2y होल स्क्वायर का वैल्यू है 4y स्क्वायर, बिकॉज 2 स्क्वायर इज 4 एंड y स्क्वायर, एंड 2y स्क्वायर का वैल्यू सेम है 2y स्क्वायर. सो यहाँ पे इस ब्रैकेट का आप मीनिंग समझ लो. ब्रैकेट मीन्स द स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल. सो दिस विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री टर्म्स, 2 2s are 4, 4xy एंड प्लस 4y स्क्वायर. मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ. So x square plus 4xy plus 4y square, and this is the box given in the question, this is activity. So 4xy will write here. Okay, now next formula. Now this is the second formula, a minus b whole square. So this is equals to a square minus 2ab plus b square. Now इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? Only the differences of one sign, that is here the sign is positive, here the sign is negative. तो यहाँ पे this is the square of difference of two terms and this is the square of addition of two terms. So here this sign will be negative. इसका example लेते हैं. Suppose the example we take is a minus 4 whole square. So formula will be first term square minus 2 into first term into second term plus second term square. So this will be a square minus 2 into a into 4 plus 4 square. This will be a square minus 2 4s are 8a plus 16. Now this is the expansion of this bracket. Now we will take next example. Now second number example in the revision is this one, 2x minus 5y whole square, and the activity is
like this. Here there is empty box minus 20xy and plus again empty box. So what will be the terms in these two brackets? Let's expand it. So you know the formula. First term square minus 2 into first term into second term plus second term square. So first term will be 2x whole square minus 2 into 2x into 5y plus 5y whole square. 2x whole square is 4x square minus 2 2s are 4, 4 5s are 20. 20xy plus 5 square is 25y square. So the first term in the empty box will be 4x square, and here we'll write this third term 25y square. Okay. Now we have to solve sub question 3 and 4 of the revision, but we will not solve this by simple multiplication 101 into 101. We have to we have to find this value and this value by using these formulas. So first of all we will write, हम इनको पहले क्या लिखेंगे, बाइनोमियल फॉर्म में लिखेंगे. तो 101 को बाइनोमियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 100 प्लस 1 होल स्क्वायर. 98 स्क्वायर को बाइनोमियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, 100 minus 2 whole square. How can we write 87? So we can write 87 as 90 minus 3, or we can write 87 also as 80 plus 7. So both these methods are right. We have written 101 as 100 plus 1 because 101 is nearest to 100 and 98 is nearest to 100. So we have written like 100 plus 1 whole square, 100 minus 2 whole square. अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला जो है, if there is addition so we'll apply a plus b whole square, there is subtraction so we'll apply a minus b whole square. 100 plus 1 whole square formula you know, first term square plus 2 into first term into second term plus second term square. So we'll write 100 square plus 2 into first term into second term plus second term square. So what is 100 square? 100 square, when we do the square, जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस गेट ट्वाइस, गेट डबल्ड. तो यहाँ पे 2 zeros हैं तो इन द स्क्वायर देयर विल बी 4 zeros. सो 1 2 3 4 zeros and 1 square is 1 plus 2 into 100, 200 into 1 is 200, 1 square is 1, and the sum of these three numbers is 10,201. 10,201. This is the answer. Now we will simplify 100 minus 2 whole square. So 101 square is 10,201. Now we have to find 98 square. 100 minus 2 whole square, formula you know, first term square minus 2 into first term into second term plus second term square. 100 square you know, this is 10,000 minus 2 2s are 4, 4 into 100, 400. 2 square is 4. Now 10,000 minus 400, this will be 9,600 plus 4. So 9,604. This is the value of 98 square. Okay. Now let's move to third formula. A plus b in one bracket, a minus b in other bracket equals to a square minus b square. और इसको ऐसे बोल सकते हैं, this is the product of addition and subtraction of two same terms. Addition and subtraction of two same binomials. Sorry, product of addition and subtraction of two binomials, that is a square minus b square. So इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और यू कैन ऑल्सो राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड ए माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट. ये सब आइडेंटिटीज़ हैं, तीनों क्या है, आइडेंटिटीज़. तो आप इसमें से ये वैल्यू लिख सकते हो या इसमें से ये वैल्यू लिख सकते हो. आइडेंटिटीज़ हैं, आप
दोनों साइड में वैल्यूज लिखोगे, ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो बोथ साइड्स विल बी इक्वल. सो ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट, ए माइनस बी इन अदर ब्रैकेट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज I take x plus 4 in one bracket and x minus 4 in other bracket. This will be first term square minus second term square. This will be x square minus 4 square. X square minus 4 square is 16. Let's take another example which is given in the book. So fifth number question in the activity is 5m plus 3m in one bracket and 5m plus 3n in the other bracket. अब यहाँ पे you observe that both the terms are same, only there is addition and subtraction of the terms. If there is addition in both the brackets, then it will be a plus b bracket square. Formula अलग हो जाएगा. You have to verify that there is addition in one bracket and subtraction in other bracket. So this will be first term square minus second term square. First term is 5m whole square minus 3n whole square. This will be 5m whole square is 25m square minus 3n whole square is 9n square. This is the answer. अब इसके बाद में है practice set 5.1 and other formulas, but we'll solve the practice set in the another video, upcoming video. First you revise and learn these formulas, because on the basis of these formulas you can solve other formulas.